Hello everyone, Nivedita is here by taking a new video on the topic Kingdom Monera. This is the topic for the students of class 11th biology and this is from the chapter 2. Okay, so Monera is one of the kingdom of 5 kingdom classification. So begin with this some information related to the Monera. Monera kingdom, it includes unicellular prokaryotic organism. This is very important to keep in mind in one word कि all prokaryotic and unicellular organisms are placed under this group. So they are considered as most ancient, smallest and simple type of organisms which do not have the true nucleus. True nucleus is that nucleus which is enclosed by a nuclear membrane. Means इसमें true nucleus नहीं होता है. Okay, because DNA is lying in the cytoplasm. Apart from this, some basic proteins are also not found in their nucleoplasm, and it includes basically bacteria, cyanobacteria, archaebacteria, and mycoplasma. Now begin with the bacteria. So bacteria, they have the very simple structure, but they are very complex in their behavior. And this group shows very extensive metabolic diversity. And if we talk of a mode of nutrition, so they may be autotrophic, chemosynthetic autotrophic, or heterotrophic also. And on the basis of shape, they are classified into 4 different groups. If they have round shape, they are coccus. If they are straight or rod shaped, then they are bacillus. If they are spiral in shape, they come to the group spirillum. And if they are comma shaped, they come to the group vibrio. This is the structure of bacterial cell. You can see it's very simple type, having the cell wall, plasma membrane. Okay, DNA is lying in the cytoplasm. They have the ribosome, a flagellum, and sex pili on their surface. So this is very simple structure. You have to practice this. These are the different types of bacteria on the basis of shape. You can see bacteria, if we talk of their reproduction, what type of reproduction they have. So they divide by binary fission, and if the conditions are unfavorable, they produce the spores, and they also reproduce by sexual reproduction, which involves the transfer of genetic material. Archaebacteria, okay, archae word means you can just think of this group, means these are the ancient bacteria. बहुत सबसे पुराने माने जाते हैं ये, and they are unique type of prokaryotic organism and they can survive in the extreme environment. ठीक है, इनको ये पाए जाते हैं volcanic walls में, hot sulfur springs में, or ice snow में, okay, very deep in the earth. So in such hostile conditions they can survive. और कैसे पॉसिबल है कि जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है वहाँ भी ये जी सकते हैं? तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज इनकी जो सेल वॉल है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल different है, that is unique one, and that's help them to survive in the extreme condition, and they are believed to be early forms of life. Okay, इसीलिए उनका नाम आर्की बैक्टीरिया है. और based on diverse living conditions and metabolic activities, they are divided into 3 groups: मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. नाम से ही पता चल रहा है मेथेनोजेंस वो हैं जो मीथेन को जनरेट करते हैं, मतलब मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं. हेलोफाइल्स वो हैं, हेलो मीन्स सॉल्ट्स, मीन्स जो सॉल्टी प्लेस पे भी रह सकते हैं. और थर्मो एसिडोफिल्स मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर और साथ में एसिडिक एनवायरनमेंट, वहाँ भी वो रह सकते हैं. Methanogens means these are the bacteria which live anaerobically in
swampy areas, marshes, and in the gut of the animals. Okay, animals. Which animals? Ruminating animals. जो which chew their cud. Okay, rumen में रहते हैं ये. और उन एनिमल्स को ये सेल्यूलोज के फर्मेंटेशन में हेल्प किया करते हैं. नाउ ट्रू बैक्टीरिया. ओके, ट्रू बैक्टीरिया जो हुआ करते हैं इसमें दे हैव द रिजिड सेल वॉल, हैव फ्लैजिलम. ओके, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया. ओके, इन्हीं को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक बट दे आर यूनिसेलर, बट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स और colony also. In these forms also they can exist. They occur in the terrestrial, marine or fresh water, and their colonies are surrounded by gelatinous sheath. They form bloom in the polluted water bodies. एंड उनकी सबसे अच्छी मतलब उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यदि वो मान लो फिलामेंटस फॉर्म में है तो उनमें कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हेट्रोसिस्ट कहते हैं. एंड दीज आर द हेट्रोसिस्ट सेल्स which can fix the atmospheric nitrogen. Okay, so you will get the diagram in the next slide. Mycoplasma also called as the PPLO, pleuropneumonia like organism. ये सबसे छोटे माने गए हैं और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती. ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं और इनके ग्रुप के बहुत सारे ऐसे हैं माइकोप्लाज्मा जो पैथोजेनिक है, मीन्स जो प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग्स पे डिजीज को कॉज करते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ द पिक्चर ऑफ द cyanobacteria nostoc. You can see the heterocyst here in the mid, जो सेल थोड़ी सी बड़ी दिख रही है. Heterotrophic bacteria, these are the bacteria which are found in most abundant. They cause diseases in plants, animals and human beings. And ऐसा नहीं कि वो सिर्फ diseases cause करते हैं, they are helpful also. and उनकी economic importance भी है. like वो कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उनसे बहुत सारे तरीके के एंटीबायोटिक्स को भी ऑब्टेन किया जा सकता है. some are pathogenic one and they causes the diseases like cholera, typhoid, tetanus, etc.